Hello students, today we will start a new topic in your mathematics chapter 5. Name of the topic is factors and multiples. Okay, before starting the topic we should know some terms. Okay, so what are the terms? Let's see. First terms is prime numbers. Okay, you know the numbers, but there are some numbers. According to the numbers, we are dividing some numbers as prime numbers. And what do you mean by prime numbers? The definition is a number greater than 1 which has only two factors, that is 1 and the number itself. Okay, 1 and the number itself is called प्राइम नंबर. ओके, प्राइम नंबर किसको कहेंगे? कोई भी नंबर 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1, जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं. ओके, फैक्टर्स किसको कहेंगे हम बाद में जानेंगे. जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ओके, इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर. उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं. नेक्स्ट, 2 is the smallest and the only even prime number. So you have to remember this one. So what is the smallest and even prime number? Answer is your 2. Okay, 2 is the smallest prime number. Next we will see the prime numbers between 1 and 100. Okay, so if you remember these numbers from 1 to 100, so it will be easy for you to do some of the uh, questions in your exercises. Okay, so you have to remember this. So try to remember the prime numbers between 1 and 100. Okay, so I am dictating the numbers. See, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, and 97. These are the prime numbers between 1 and 100. Okay. नेक्स्ट द टर्म इज कंपोजिट नंबर्स. ओके, प्राइम नंबर में हमने क्या देखा था? कोई भी नंबर 1 से बड़ा होता है और उसका दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और वही नंबर, तो उसको कहते हैं हम प्राइम नंबर. अभी हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स. ए नंबर ग्रेटर देन 1 which has more than two factors is called a composite number. Examples: 4, 6, 8, 9, 10. And 4 is the smallest composite number. Like your 2 is the smallest even prime number, 4 is the smallest composite number. Okay, remember these two numbers. 2 is the smallest even prime number. Okay, तो कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है. ओके, लेकिन 2 एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है. और ये जो 4 होता है, ये 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है. ओके, नेक्स्ट रिमेंबर अनदर नंबर, दैट इज 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. जो 1 होता है ना तो वो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है. ये क्या कौन सा नंबर है? इट इज ए यूनिक नंबर. ओके, नेक्स्ट वी विल सी ट्विन प्राइम्स. ओके, twin prime numbers with a difference of 2 are called twin primes. There is a composite number between the twin primes. Okay, if you see examples 3 and 5, 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 29 and 31. If you see
these two numbers 3 and 5 are prime numbers. In between them 4 is there. 4 is a composite number. 5 and 7, in between them 6 is there. 11 and 13, 12 is there. 29, 31, 30 is there. And the difference is if you see 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 13 minus 11 2, and 31 minus 29 is also 2. Okay. Next we will see co-prime numbers. Two numbers with only one as the common factor are called co-prime numbers. Okay. दो नंबर जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, कौन सा? वन. अगर कोई भी दो नंबर है, अगर उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है दोनों नंबर में से, तो उन दोनों नंबर को हम कहते हैं को प्राइम्स. ओके. और यहाँ पे एक है जो चीज आपको याद रखना है, को प्राइम नंबर्स आर नॉट नेसेसरीली प्राइम नंबर्स. ऐसा फिक्स नहीं है कि जो को प्राइम नंबर्स है वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए. उसमें से एक प्राइम नंबर दूसरा कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उन दोनों में सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए. ओके. एग्जाम्पल्स 4 and 5, 5 and 11, 18 and 23, 15 and 28. Any two consecutive numbers are always co-primes. Okay. For example, 4 and 5. If you take 4 and 5, so 4 and 5 also called co-prime numbers. Next we will see, just I told you sometime before that we will know later that what is a factor. Okay. So let's see what is a factor. A factor of a number is a number which completely divides the given number without leaving a remainder. For example, factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. तो अगर हम देखेंगे 12 का फैक्टर, ओके, 12 1 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, 2 से डिवाइड होता है 2 6 जा 12, 3 से डिवाइड होता है 3 4 जा 12, 4 से भी डिवाइड हो सकता है 4 3 जा 12, 6 भी डिवाइड हो सकता है 6 2 जा 12, और वो खुद से भी 12 1 जा 12 भी डिवाइड हो सकता है. तो ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, these numbers are called the factors of 12. ओके. अभी समझ में आ रहा है कि फैक्टर्स किसको कहते हैं. सपोज आप 15 ले लो, तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे. सपोज आपने 15 लिया. ओके. 15 के फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे. 1, देन 2 नहीं होता है 3, बिकॉज 3 5 जा 15. उसके बाद 5 5 3 जा 15. उसके बाद खुद 15. So 1 3 5 and 15, these are called the factors of 15. Okay. Next we will see the multiple. Multiple is very easy. Okay. How to know multiples? See, in multiple of a number is a number obtained by multiplying the given number by counting numbers like 1 2 3 4 5. Okay. फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 10, तो इसका मतलब क्या है. सपोज हमें 10 का मल्टीपल निकालना है, तो आपको जैसे आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5, तो 10 का मल्टीपल का मतलब क्या है. 10 से 1 को मल्टीप्लाई करना. सी, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 into 4 40. So these 10 20 30 40 is your multiples of 10. Okay. As if you are reciting the tables, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10. So these are the multiples of 2. Okay. So like that, if you find multiples of suppose 11, 11 1 ja 11, 11 into 1 11, 11 2 ja 22, 11 into 2 22. Okay. So these are called the multiples.
remember some points. Multiples of 2 are called even numbers. Okay, if you see multiples of 2 are 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18, 2 10 ja 20. These 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, if you see, these numbers are even numbers. So this is a rule. If multiples of 2 are called even numbers. Numbers which are not multiples of 2 are called odd numbers. Remember these two. Next, we will see the main thing in this chapter, that is your prime factorization. Okay. A composite number can be expressed as the product of its prime factors. Okay. Consider the number 30. एक example उसने लिया है 30 का. So let's find out the factors of 30. So what are the factors of 30? 1, next 2, because 2 into 15 30, next 3 into 10 30, next 5 6 are 30, then 6 5 are 30, then 10 3 are 30, then 15 2 are 30, then 31 are 30. So out of these factors, what are the prime factor? If you see, 2 3 5, okay, these are 2 3 5, these are prime factors. Okay, out of these factors, the prime factors are 2 3 and 5. So 30 is equal to 2 into 3 into 5. If you multiply 5 3 are 15, 15 2 are 30, this is called prime factorization. Okay, next we will find out the prime factorization of 84. One example. Okay, see, method 1, this is called factor tree method. If you see, this looks like a tree. Okay, so that's why this method is called factor tree method. So how to find out the prime factorization of 84? See, 84, if we, it is divisible by 2 because 4 is present in unit place. So 2 into 42. Okay, 2 into 42 is equal to 84. Then 2 is carried over here. Then again this 42 is divisible by 2 because 2 is here. So we'll divide by 2. So 21 comes. Okay, 2 into 21 42. Okay, then these two further carried over here. Then this 2 also. Then if you divide 21, 3 7 are 21. If you see these 2 2 3 3, all these are prime numbers. Okay, so 84 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7. 2 into 2 into 3 into 7. Okay, so this is called prime factorization and the method is called factor tree method. Next we will see the short division method. So this is very important because this type of factorization you will use in higher classes. So practice this type of method. Remember this type of method, how to find out by short division method. Okay, see, it is very easy. How? See, 84 लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2 लिखा है. सो इसका मतलब है 84 डिवाइडेड बाय 2. तो इफ वी डिवाइड 84 बाय 2, 42 विल कम. ओके, अगेन 2 से डिवाइड करना है, 21 विल कम. 3 से डिवाइड करना है, 7. देन 7 1 just 7. लाइक दिस यू हैव टू राइट. सी, 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. जैसे हमने मेथड 1 में देखा था, वो वहाँ ही वही आंसर निकला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. ओके, so method 1 is your factor tree method and method 2 is your short division method. Okay, to get the prime factorization of a number by division method, we divide the given number by prime numbers, only the prime numbers. Okay, not 4, not 6, only we can divide by prime numbers. Okay, 2 3 5 7 and so on, as long as the quotient is divisible by that number. If you see, इसमें ये 2 3 7 these all are prime numbers. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 6 या 8 का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स का ही इस्तेमाल करना है. ठीक है, we continue the division till the quotient is 1.
अभी अगर यहाँ पे आपने देखा होगा, ये लास्ट में ये क्वेश्चन 1 तक आता है, ये इसके बाद ये आपका डिवीजन कंप्लीट होता है, शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। So now do one thing, go to the exercises, okay, see the numbers. So in the next video, I will explain one question, one number from each one bit from each question, okay. In the next video, I'll do that. So before that, try to solve the questions, okay. If you can solve, then it is very good. Otherwise, I will give the video in the next class, okay.